ये क्वेश्चन CBSE 2025 का है. The statement of the problem says let R be a relation defined over n. N is the set of natural numbers defined as m related to n. So this is a relation R which is defined in the set of natural numbers. अब इसमें रिलेशन क्या दिया, m is related to n. कब बोलेंगे? when m is a multiple of n. अब इसमें m and n both belongs to the set of natural numbers. Find whether R is reflexive, symmetric or symmetric and transitive or not. So we have to check for reflexive. Reflexive relation कब बोलते हैं? when m comma m belongs to the relation. m comma m belongs to the relation कब बोलेंगे? m related to m. This is true because m is a multiple of m. Any number is a multiple of itself. कैसा बोल सकते हैं? m is a multiple of m. क्यों? क्योंकि m is 1 times of m. एग्जाम्पल के लिए 2. एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है आप एग्जामिनेशन में दें. 2 is related to 2 because 2 is a multiple of 2. 2 is a multiple of 2 because 2 into 1 is equal to 2. So we say that this R is a reflexive relation. ये पहला. अब now we'll try to check for symmetric. Symmetric के लिए अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं? We have to check for symmetric. M related to n. This should imply that n is a multiple of n. अब इसका मतलब यह है m related to n है. मतलब क्या है? m is multiple of n. मतलब m is lambda times n. क्या इससे n related to m आ रहा है? तो इसको अगर अभी हम लोग देखें, n will be equal to 1 upon lambda times m. So we say that n is not a multiple of m. n is not a multiple of m. So we say that n is not related to m. इसको अभी हम एक एग्जाम्पल से क्लियर कर दे रहे हैं. 12 is related to 4 because 12 is 3 times 4. 12 is a multiple of 4. But 4 not related to 12 because 4 is not a multiple of 12. तो अब इससे ये पता चल गया m related to n implies that m related to n. This implies that n comma m does not belong to R. So this relation is not symmetric. अब इसके में तीसरा अभी हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव में. पहले अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर उसके बाद अभी एग्जामिनेशन में कैसा लिखना है ये बता दे रहे हैं. 16 रिलेटेड टू 4 है एंड 4 इज रिलेटेड टू 2. रीज़न क्या है? 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2. रिलेशन ये दिया हुआ है. तो इज 16 रिलेटेड टू 2? Yes, 16 is related to 2 because 16 is 8 times of 2. So we say that this relation is a transitive relation. Examination में कैसे लिखेंगे? m related to n related to p. इसका मतलब क्या है? m is lambda times n and n is k times p. इसमें सब्स्टिट्यूट अगर करें तो m इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स n की जगह भी हम लोग क्या लिख लेंगे? k इंटू पी. सो वी से दैट
lambda into k will be another number. So we say that lambda एक whole number है, natural number है, k is also a natural number. So we say that lambda into k will be another natural number. So m will be m is multiple of p, or m is related to p. So this relation is transitive. R is transitive, ऐसा कह सकते हैं. This is not symmetric and this is a reflexive relation. So this relation is a reflexive and transitive relation but not a symmetric relation.